any reduction in it, but the routes are different, and anything that is done as regards minority affairs department's allocations is done entirely on the recommendation of that concerned ministry. So there is no cutouting from the point of view we don't have money to give or anything of that kind. What comes from the ministry, particularly in this case, what came from the ministry is what was agreed on. अनुराग. नमस्ते मैम, मैं अनुराग 18 नाउ सुदेश से। मैम अभी जो सवाल में बताया कि क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ ऐलान हुआ है बजट में, उसमें इंश्योरेंस कंपनियों ने एक मेमोरेंडम तैयार किया है और वो अगले हफ्ते आपको पेश करने का सोच है, जिसमें वो ट्वीट की लिमिट 5 से 10 लाख करना चाहते हैं। तो आप उसको साफ कर रही है कि उसका कोई मतलब नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो हमें मिला नहीं है, उसके ऊपर मैं कैसे बात करूं? हाँ मैम, तो वही क्योंकि आप बोल रही हो। नहीं ऑन रिकॉर्ड बोला है। नहीं ऑन रिकॉर्ड किसने बोला, कहाँ बोला है? वो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। जब रिप्रेजेंटेशन आएगा तब देखा जाएगा, हमारे जवाब तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। मैम दूसरा सवाल है, जो पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसको लेके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनका जो मार्केट शेयर है लगातार घटता जा रहा है। इस साल मुमकिन है कि पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 30% तक भी आ जाएगा, उससे नीचे आ जाएगा। तो उसको लेकर क्या सरकार की रणनीति है? क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि पहले लिस्टिंग की योजना थी, फिर मर्जर की योजना थी। अब 2 साल पहले वाले बजट में एक कंपनी के प्राइवेटाइजेशन के बारे में कहा गया था। तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके अंदर काफ़ी असमंजस की स्थिति, और अब जो आप नया इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं जहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस है वो भी दिया जाएगा, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन लाइफ के प्रोडक्ट बेच पाएगी। तो क्या हम माने कि आगे चल के जो सरकार जो है, जो एक ही इंश्योरेंस, जैसे आपने कहा भी ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर एक ही कंपनी है, तो सारी जो कंपनियां हैं उसको एक तौर पे भी देखा जा सकता है? आप बहुत विस्तार से प्रश्न पूछे, मेरा जवाब एक जवाब होगा, मगर उसको आप हर एक आपके क्वेश्चन में जितने भी विविध अंश है उसके लिए तोड़ मोड़ नहीं करना। नहीं ठीक है, मैं ये स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन या मर्जर एक्विजिशन जैसे आपने अच्छा सा वर्णन किया, पता नहीं वो वर्णन कहाँ से निकलता है। सरकार तो पॉलिसी एग्जैक्टली 2 बजट के पहले 21-22 बजट में स्पष्ट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी के द्वारा स्पष्ट की। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे हम डील कर रहे हैं वो स्पष्ट निकल कर आएगा। उससे आप सच्चाई को जोड़ना चाहिए, ना कि जैसे आपने वर्णन किया। मुझे तो वो पता नहीं कहाँ से वर्णन है, मैं रिलेट कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सरकार में जो हम रिलेट करते हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी जो बजट में 21-22 बजट में बोला गया। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज आप इतना अध्ययन करते हो इंश्योरेंस के ऊपर, वो पीएससी पॉलिसी को अध्ययन करो, उसके ऊपर आप भाषण भी दो, आप अच्छा भाषण देते हो। अजय रामनाथन. Good morning. So my question is with regard to specific amendments that are mentioned towards Banking Regulation Act and other financial regulations. So I wanted to know what are the areas that are being looked at as far as amendments are concerned. So there is being put forth that the Banking Regulation Act and other financial regulations will be looked at and specific amendments will be made. So what are the areas that are being focused on? I'm not sure through media, especially when the parliament is in session, I'm going to be discussing amendments to the bills that I'm bringing in. That will be absolutely improper. So I'll ask you to wait till such a time that gets spoken about in the House. Ekta. गुड आफ्टरनून मैम, एकता सूरी फ्रॉम जी बिजनेस। मैम आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोगों ने वेलकम किया है नए टैक्स रिजीम को, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसा सेक्शन भी है जो क्रिटिसाइज कर रहा है ये कहते हुए कि क्या ये डिस्करेज करेगा सेविंग्स को बहुत से सेक्टर्स में, जैसे कि इंश्योरेंस। और इसके अलावा मैम ये भी पूछना चाहूँगी, आरबीआई पॉलिसी अगले हफ्ते आ रही है और इन्फ्लेशन डेटा जो है वो कहता है कि बहुत इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। आपको लगता है कि क्या हम
रेट के पीक हाइक पर है या अभी और एक्सपेक्टेड है? और तीसरा सवाल मैम ये कि बीपीसीएल और कॉन्कर का डिसइन्वेस्टमेंट कब तक होगा? I'm trying to keep my mind alert so Sure, that I'll sorry. follow, but 3-4 will be a bit too much. Your first question was, मैम ऑन न्यू टैक्स रिजीम दैट yes, बहुत wait. The old system exists even now. Savings को discourage कर रहे हैं? नहीं, please, you please stay in that. Because it's encouraging you. Encouragement or discouragement is the assessee's perception. Sarkar ki intent very clearly, like the very many recommendations which have come over the decades on simplifying direct tax, उस simplification के रास्ते में second regime, taxation का regime आया. अगर आपको लगता है कि मुझे इंसेंटिव मिलना चाहिए मेरा परिवार के लिए, मैं सेव करने के लिए और इंश्योरेंस स्कीम में आने के लिए, आप रह जाओ भैया ओल्ड सिस्टम में. कौन आपको इधर जबरन लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं. सो व्हाई इज दिस नरेटिव particularly? You're welcome to ask any question because you're media, but what is this narrative building on? सरकार सेविंग्स को डिस्करेज कर रही है. भैया प्लीज यू स्टे देना, टेक ऑल द इंसेंटिव, बट ये भी मन में रहना चाहिए कि ये यहाँ सेकेंड स्कीम, न्यू स्कीम में रेट टैक्स का कम है और उधर ज्यादा है. सो एक तरफा हम इंसेंटिव, आई एम नॉट कॉलिंग इट इंसेंटिव, बट एक तरफा हम इंसेंटिव दें, प्लीज सेव हियर, पुट इंश्योरेंस, बट आई विल टेक अ हाई टैक्स फ्रॉम यू. अगर आप मंजूर है तो उधर रह लो, मगर यू वांट लेसर टैक्स and more money in your hand, you come to this one. And more money in your hand because उतना tax कम pay कर रही हो. मैं मानती हूँ as a adult, as a earning adult, as an adult who is taking care of his or her family, you will be the best person to choose where you want to put your money. So इसमें incentive, disincentive की बात ही नहीं है. A simple tax structure with better, convenient and suitable rates. Second question. And my second question was on RBI policy Yes. जो अगले हफ्ते है. Again, I think even while addressing the industry and professionals, I said this. Industry is not asking this question. And I think it's completely a matter which the RBI has seized off, and I'm sure they've taken appropriate call. And मैम कॉन्कर एंड No, बीपीसीएल the second हो गया है. Shall we move on? समीर भी से. मुंबई सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन बार बार पॉलिटिशियंस की ओर से आगे कहा जाता है कि जितना मुंबई को मिलना चाहिए, महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता. फिर कौन तय करता है इसको? Yes. तो आप इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं दें. नहीं, मैं आपसे एक बार, मेरा मन में स्पष्टता होने दो जी. ये कौन तय करता है कि मुंबई इतना देती है तो मुंबई के लिए इतना मिलना चाहिए? मुंबई इतना देती है, मुंबई को मिलना चाहिए, फिर अकोला क्या करेगा, औरंगाबाद क्या करेगा, महाराष्ट्र के अंदर ही मैं बात कर रही हूँ. हाँ, नांदेड़ क्या करेगा, रायगढ़ क्या करेगा, पूरे मुंबई को दे दो. ठीक बात है, आपका लॉजिक हो सकता है. देश ऐसे नहीं चलते. देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइंड बॉडी जो 5 साल के एक बार मिलती है. फाइनेंस कमीशन तय करती है कहाँ कितना डिवल्यूशन होना है. उस फॉर्मूला के तहत हम स्टेट्स को पैसा देते हैं. मान लीजिए हर स्टेट में अगर एक शहर ऐसे डिमांड रखता है कि हमारे ही पैसा ज़्यादातर चलती है, स्टेट में भी एक प्रांत डेवलप होगा, बाकी सब प्रांत चुपचाप बैठना पड़ेगा. Can I add a small clarification? ये मैं एक स्टैटिस्टिकल स्पष्टीकरण देना चाहूँगा आपको. मुंबई से टैक्स कलेक्ट होता है, लेकिन स्टेट, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका 15,000 ब्रांच है पूरा भारत में, उसका पूरा इनकम टैक्स यहाँ से भरता है. इसका मतलब नहीं है कि पूरा अर्निंग मुंबई में हुआ. एक स्टैटिस्टिकल स्पष्टीकरण. एस बालकृष्ण. Ma'am, yesterday the finance secretary he said that the Adani controversy is a storm in the teacup. जस्ट 1 मिनट, मैं ज़रूर आपके हर प्रश्न को जवाब दूंगी. पहले बजट के विषय में ख़त्म करें, बाद में बजट के अलावा विषय में आएंगे.
Hi, I'm Yosuke Hanada from Nikkei, Japanese newspaper agency, and I would like to ask about the expenditure regarding Global South. So last month, Indian government hosted the Voice of the Global South Summit, and I personally assume that India continuously expected to take the initiative in that area. So in that sense, how the new union budget can support this kind of initiative in India's diplomacy in financial aspect? Um, well, not just this budget, but even earlier budgets have always been understanding of the requirement of the global south. Most of our taxation policies have also been influenced by the need to support global south. I remember quite some time ago, 7, 8 years ago, we confirmed the policy for quota-free, um, tariff-free trade with these countries. So when you talk of quota-free, tariff-free, any import into India coming from these largely global south countries would receive a treatment with no restriction on quota of amounts which come in, the quantum which comes in, or any tariff will be laid on them. So that was one of the ways in which we sustained. Similarly, we have lines of credit given through which many of these countries' basic infrastructure gets built. I'm not saying India is the only country which offers it, but India does offer it. And India offers it to many of these countries in the south, global south. That's a second. And in fact, there was a time when some kind of a comparison was being made. We are one of the largest, if not the largest, we are one of the top 5 countries which support uh, global south in terms of favorable credit being lines of credit being operated so that they can build their infrastructure. Second, third, I'm not sure. I don't want to tread on an area on which I'm going by your name. But if you're from Japan or anywhere near Japan, you'll understand there was a time when Japan used to receive a lot of assistance, but equally, at the very same time as it was receiving a lot of assistance, it would also support countries through what we call line of credit, grants given to countries which required grants from Japan. So a country like Japan receiving assistance from other countries for its own development at that very same time also extended assistance to many other countries which so required. So India today actually is in that kind of a situation. It may receive funds from World Bank, ADB, and so on for its developmental activities, as much as it also supports countries from the global south through various such means. So other than this, there are also government to government supplying of goods, sharing of items like vaccines, and so on. So global south is something which is not just happened today when we are becoming the president for G20. It's a tradition that India has maintained and we actively support it even today.